चलिए, तो विल स्टार्ट हियर द मीनिंग ऑफ द रिसर्च। पहले हम मीनिंग ऑफ द रिसर्च को पढ़ते हैं कि क्या होता है। सो इसकी ओरिजिनेशन एपिटेमोलॉजी की बात करेंगे, दैट फ्रॉम वेयर द वर्ड दिस केम, कहाँ से ये वर्ड आया। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक पूछा नहीं है रिसर्च को लेकर, बाकी टर्मिनोलॉजीज को लेकर पूछा जा चुका है। बट द मीनिंग ऑफ द रिसर्च दैट इज ऑल्सो हेयर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिसर्च वर्ड from where it has been originated, this is the point which is important. So the word research perhaps originate from the old French word that is researcher। ठीक है, इसको ध्यान में रख लिए, ग्रीक वर्ड नहीं है, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। सर्च अगेन, बार बार सर्च करना, रिसर्च। तो इफ यू ब्रेक दिस वर्ड, दैट इज रिसर्च, दैट इज री प्लस सर्च, मीन्स बार बार ढूंढना, किसी चीज को बार बार ढूंढना। दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट, व्हाट यू डू, यू सर्च इट, you search again and again, right? So this is what the research, re का मतलब that something which put you into knowledge, right? Extra knowledge या add something new into existing knowledges, so that is what the research। re का मतलब दोबारा। So understanding the meaning of the research, so first thing it is that creation of new knowledge। ठीक है, creation of why we do research, कि न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अगर आपको नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इफ यू नॉट गेट द न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेजेस, सो व्हाई विल यू डू रिसर्च, राइट? सो रिसर्च वी डू बेसिकली टू फाइंड समथिंग न्यू नॉलेज, टू क्रिएट सम न्यू नॉलेज और ऐड समथिंग न्यू नॉलेज इनटू द एग्जिस्टिंग थिंग्स। ओके, सो that is what the our main meaning of the research। next it is that answer to things that are unknown। कोई चीजें जो नहीं पता है, विच इज अननोन, दैट आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड द आंसर, राइट? फाइंड द आंसर ऑफ दैट थिंग्स विच आर अननोन, जो नहीं पता है उस चीज को हम फाइंड आउट करना, ये रिसर्च है। फिलिंग द गैप्स इन द नॉलेज, ठीक है, जो गैप ऑफ द रिसर्च है, फिलिंग द गैप्स ऑन इन द नॉलेज, दैट इज व्हाट इट इज हियर। कि फॉर एन एग्जांपल, कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, राइट, विच वी हैव लेफ्ट, कोई चीजें छूट गई है। नाउ द नेक्स्ट फर्दर रिसर्च हम उनके लिए छोड़ देते हैं, दैट सो दैट दे कैन फाइंड द गैप्स, और कोई चीजें छूट जाती है, so that they find the gaps and then they do research। like for example in the terms of the theory also, like magic bullet theory, right? There was a gap that there like you can also take the example of when we were reading the Laswell models, there were the drawbacks, there were the gaps in the research, so what they do, they find the new theory, right, which has criticized the previous models। So same way here it is, the whatever the gaps in the knowledges are, that we try to fill by the research। next here it is studious inquiry or examination especially। So this is the research is a somewhere you will find the definition, in the definition, that research is a systematic inquiry, research is a investigation, research is a critically examinations। So this is what that कि आप पूछताछ करते हो, आप रेस्पोंडेंट के पास जाते हो, यू गो टू रेस्पोंडेंट्स एंड यू कलेक्ट द डेटा, यू टेक इंटरव्यू एंड कलेक्ट द डेटा, you do the observations method and just you take the data। So that is what you are examining the things to get the data, you are inquiring the respondents to get the data or analyze the data, right? So this is what the studious inquiry or examination especially, हम एग्जामिन करते हैं, पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यही इसी को क्या बोलते हैं, हम रिसर्च बोलते हैं। Investigation or experimentation, so experimentation is also become important in the research because they are हम चीजों को like we just made the group, हम group A, group B, group C, we divide into the various groups and we just टेस्ट करते हैं, उस पे हम टेस्ट लगाते हैं, right? different test are applied on that, right, on the different groups and we see, we compare the कंपेयर अमॉन्ग द ग्रुप, राइट? कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, किसका इफेक्ट किस पे है। वी डू एक्सपेरिमेंट ऑन द वेरिएबल्स, वी कैन से ऑन द ग्रुप्स। हम अलग अलग ग्रुप बनाकर या फिर अलग अलग मेथड से यूज करके वी डू जस्ट एक्सपेरिमेंट, right? So this is what we can say, that research is also a experimentation।
टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कैजुअल रिलेशंस. सो कैजुअल रिलेशंस हम फाइंड आउट करते हैं. हाउ वी फाइंड द कैजुअल रिलेशंस एंड हाउ वी अंडरस्टैंड द कैजुअल रिलेशंस. देयर आर द वेरिएबल्स एंड इन बिटवीन द वेरिएबल्स वी फाइंड दैट देयर इज अ कैजुअल रिलेशंस और नॉट, राइट. दैट इज व्हाट द रिलेशन फाइंड आउट करना, टेस्ट लगाना. डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आर अप्लाई to verify and valid and to check the reliability of the your data. So that's why we used to do the or implement the test in the research. Research के अंदर हम टेस्ट लगाते हैं so that we can verify our data, we can validate our data, we can make the reliability of our data. So this is what why we implement the test in the research. So understanding the causal relation is also we find the relations between, there is a association between or not, there is a relations between or not, there is a positive relation, negative relations, किस तरीके का relations है. We find the relations, right? We find the association between the groups, between the variables, between the some kind of particular things. Okay, चलिए. Next, it is that methodologies and understanding. This is also very much important, that what are the methods that you are going to apply, right? So methodology और उसको समझना कि कौन सी मेथड इसमें हमारी अप्लाई हुई है या हम अप्लाई करने वाले हैं, right? Methodology is just a blueprint of your research, that what are the things that you are going to apply, what would be your sample, क्या आपका सैंपल होगा, क्या आपकी एनालिसिस की टेक्निक्स होगी, व्हाट विल बी व्हाट सैम्पलिंग टेक्निक्स यू विल अप्लाई, व्हाट द सैम्पलिंग साइज वुड बी, राइट, व्हाट वुड बी योर पॉपुलेशन. सो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मेथड्स, राइट, वट एवर वी सी, राइट, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट योर क्वेश्चनर, कैसे आप अपने क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, विच टेक्नोलॉजी वुड यू अप्लाई टू एनालाइज योर डेटा. सो दैट इज व्हाट ऑल कम्स अंडर द मैथडोलॉजी. सो मैथडोलॉजी गिव्स यू to analyze, to collect. These are the tools and techniques that are defined inside the methodology. ठीक है, सारे tools and techniques किस में define होते हैं, methodologies के अंदर होते हैं. और methodology कुछ methods होता है. There could be some methods, like for an example कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, I am teaching from here and that you are listening, so there is a method. क्या मेथड हम अप्लाई करें, व्हाट द मेथड्स, द मेथड इज द पीपीटी मेथड, राइट, द डिफरेंट व्हाइट बोर्ड मेथड, different methods are there to teach, right? So that is what we can say, the learning methodology or teaching methodology. What methodology you are taking to teach the students, right? द टीचिंग मेथड्स आर क्या, आप चौक बोर्ड पे चौक को लेकर पढ़ाते हो, चौक से पढ़ाते हो, या फिर मार्कर से पढ़ाते हो, या फिर जस्ट यू ओरल लेक्चर्स है, विजुअल प्रेजेंटेशन है. व्हाट द मेथड्स यू आर अप्लाइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, राइट? सिमिलरली इन द रिसर्च एरिया ऑल्सो. So what are the methods to collect the data? What are the methods to analyze the data? So that is what inside the methodologies. ठीक है. Next it is here, revision of accepted theories or laws in the light of new facts. So sometimes you apply the theoretical framework in your research. Theoretical framework becomes also important in the research, that how you are going to apply, right? So for an example, if you are if you are doing research on the impact of the audiences, कि audience का क्या impact है television का, right? For an example, the impact of television on the audiences, this is your title of your research. But there is a there is a theory which has already been proved related to your title, that is cultivation theory, that is uses and gratification theory. So they have researched on the televisions, that how television impact on the audiences. So you will apply the theoretical framework. आप theoretical framework वहाँ पे apply करेंगे. You will describe the theories, that whatever the revision of accepted theory means, that is you apply the existing theories in your research, right? That how it is applicable in your research. So in that, to make to find some new facts from the existing theories, right? So that is what, that the revision of accepted theories or the lies in the light of new facts. ठीक है. So this was all about the meaning of the research that we have tried to understand. Is there any doubt in any of the point? Then please ask. कोई भी doubt है किसी भी point में, then please ask. Everybody, it is all clear or not?